Hello everyone, I Anupama Sharma will discuss the syllabus of term 1 of 2021-22 for class 10th. आज मैं डिस्कस करन जा रही हूं जेड़ा सिलेबस है टर्म 1 ਦਾ 2021-22 ਵਾਸਤੇ। सब तो पहले रीडिंग स्किल्स है साडे कोल। रीडिंग स्किल्स साडे कोल आएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देन इंग्लिश मेन कोर्स बुक और इंग्लिश मेन कोर्स बुक चों साडे पहले 4 लेसन्स हैं। द हैप्पी प्रिंस, वेयर इज द साइंस टेकिंग अस, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस और अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस। उस तो बाद पोएम्स हैं साडियां 3 पोएम्स हैं इहदे विच। Character of a Happy Man, Death the Leveler, a Ballad of Sir Pertab Singh. Then Supplementary Reader. Supplementary Reader ਦੇ ਵਿੱਚ 3 lessons हैं। Bed number 29, half a rupee worth, and then $1,000. Next vocabulary है। Vocabulary one word for many, 1 to 40. Common errors, all common errors. Common proverbs from 1 to 40 from your grammar book. Then in grammar, there is use of determiners, preposition, use and kinds of non-finites. Then simple, complex and compound sentences. And then voice. Writing section च साडे कोल notice, advertisement and message writing. Now I shall tell you the structure of the question paper कि question paper दा structure कहे जा होएगा, यानी किन्ने किन्ने नंबर दे की आएगा। There will be total 40 multiple choice questions of 1 mark each. 40 सानू multiple choice questions आएंगे जेडे एक नंबर दे होंगे। हर एक च choice दित्ती होएगी, 4 options दित्ते होंगे। सारे questions सानू compulsory होंगे। रीडिंग स्किल्स 5 मार्क्स दियां होंगियां और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन होएगा। और 5 MCQs होंगे 5 मार्क्स दे। देन सेक्शन बी ओदे टेक्स्ट बुक्स आ गईयां साडियां। टेक्स्ट बुक्स सेक्शन जेड़ा है वो 15 मार्क्स दा है। ओदे साडी मेन कोर्स बुक एंड लिटरेचर बुक दोनों आनगियां। क्वेश्चन नंबर 6 to 11 यानी 6 मार्क्स दे इंग्लिश मेन कोर्स बुक चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 12 to 16 यानी 5 मार्क्स दे सानू 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर चों। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 17 to 20 जेड़ा है ओदे च इंग्लिश मेन कोर्स बुक च जेड़ी पोइट्री सेक्शन है वो आनगे। 4 नंबर दा मेन कोर्स बुक चों पोइट्री सेक्शन है। ओदे चो 2 ते MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे which will be based on stanza of the poems और 2 जेड़े हैं वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम्स चो आनगे क्वेश्चंस सानू। दैट मींस पोइट्री सेक्शन विल बी ऑफ 4 मार्क्स। 2 स्टैंजास चो चूज करके क्वेश्चंस करने होंगे और 2 क्वेश्चन साडे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम्स चो यानी सानू चॉइस ते दित्ती होएगी। क्वेश्चंस पोएम्स चो होंगे लेकिन स्टांजा बेस्ड नहीं होंगे। सेक्शन सी वोकैबुलरी सेक्शन है वो 3 मार्क्स दा आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 23 ओदे च की आएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन एरर, कॉमन प्रोवर्ब्स। देन सेक्शन डी 17 मार्क्स दा है और ओदे च ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कंपोजिशन तीनों चीज़ां कवर होंगियां। क्वेश्चन नंबर 24 to 27 ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी और ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश आएगी। यानी 24 और 25th क्वेश्चन जेड़ा होएगा वो तुहाडा होएगा ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और 26th और 27th क्वेश्चन जेड़ा होएगा ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश। देन क्वेश्चन नंबर 28 to 35 8 MCQ क्वेश्चंस होंगे। किना चुआनगे वो डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशन, यूज एंड काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट,
simple, compound and complex sentences and voice. 8 marks का सेक्शन है. फिर क्वेश्चन नंबर 36 to 40 जेडे होंगे वो composition based होंगे. 5 MCQs out of these होंगे और वो MCQs ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? नोटिस, एडवर्टाइजमेंट्स, मैसेज राइटिंग, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ किसी भी जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ. ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਐਂਡ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਨਾਓ I will discuss the sample paper which is of maximum marks 40. Section A. Read the poem below carefully and answer the questions. When cats run home and light is come, a dew is poured upon the ground and far off stream is dumb, and the whirling sail goes round, along the warming his 5 wits, the white owl in the belfry sits, when merry milkmaids click the latch, and rarely smells the new mown hay, and the cock hath sung beneath the thatch, twice or thrice his rounded lay, alone and warming his 5 wits, the white owl in the belfry sits. How is the arrival of the morning is heralded by running stream, how is the arrival of the morning is heralded by? Now we have to discuss it and we have to find the answer to this question, and the answer is cocks singing. Cocks singing. Your next question is, what does the owl prefer? The owl prefer loneliness. Next, what does the poem describe? The poem describes an owl. Next, a word in the poem which means a roof covering is thatch. Your next question is, which morning activities are described in this very poem? Milking of cows and cocks crowing. The poor seamstress was given the ruby. Which age group is overcrowded today? Upper age group. Faith in God gives us real peace of mind. The proud possession of Jim was gold watch. Who did not have enough money to buy a Christmas present? Della. Machines give us more and more hours of leisure. Then question answers from literature book. The author regained his eyesight after the 3rd operation. To whom did Bobby Gillian give his $1,000? To Miss Hayden. Robert Gillian offered a diamond pendant to Miss Lotta Laurier. Subia's profit increased during the war. Where did Subia's wife take the man? To a secret godown. Read the stanza given below and answer the questions that follow. Beneath the morning stars, they rode beneath the evening sun, and their blood sank to them as they rode, that all good wars are won. Who were the writers? Who were the riders? Englishman Pertap Singh. That means Englishman and Pertap Singh both were the riders. So 3rd option is correct, both A and B.
Name the poet of the poem. This poem is a ballad of Sir Pertap Singh and the poet is Sir Henry Newbolt. Now answer the following questions. The happy man obeys the rules of goodness. What lives after death are good deeds. Now vocabulary section, art of beautiful writing, handwriting nahi hunda, photography bhi nahi hunda, it is calligraphy. Charity begins at home. Choose the correct option to complete the proverb. Charity begins at home. It is the proverb. Choose the correct sentence. He is a MA, he is the MA, or he is an MA. Third option is correct. He is an MA. Now translate from English to Punjabi or Hindi. They pulled down the statue of Happy Prince. उन्होंने Happy Prince का बुत गिरा दिता? No. उन्होंने Happy Prince का बुत खिंच के गिरा दिता. उन्होंने Happy Prince का बुत खिंच दिता. उन्होंने Happy Prince का बुत खिंच के बाहर कर दिता. Second one is correct. Next, this is a problem common to us all. ये साडे सारियां दी एक सांझी समस्या है. ये सारियां दी एक समस्या है. साडे सारियां दी एक समस्या है. ये साडे सारियां दी समस्या है. No, first one is correct. Next, translate the following sentences from Punjabi to English. मैं अपना काम खत्म कर लिया है. I finished my work. No, I have finished my work. सवेर तो बूंदाबांदी हो रही है. It has been raining since morning. No. It is raining since morning. No. It has been drizzling since morning. Delhi is the capital of India. He is really a man of either this, no, of two, no, two into, no. He is a man of letters, but he was blind with, no. Fourth option is correct. He is a man of letters, but he was blind of one eye. I am tired of done, no, to do, no, doing. He was too tired, run, no, running, no, to running. Also incorrect. Fourth option is correct, to run. She is the girl who helped me. She is the girl. Choose the subordinate clause. She is the girl. No. Who helped me is the correct answer. She will water the plants. Change the voice. The plant is watered by her. No. The plant was watered by her. No. The plants will be watered by her. It is correct. Next, who told a lie? Change the voice. Told who was lie galat. By whom was the lie told? It is correct. Now here it will be question mark instead of your full stop. There will not be a full stop. Here it would be a question mark. Next, your next question is, I want to confirm if he has hand in it. Identify the principal clause now. Now you have to identify the principal clause. That means I want to confirm. This will be the correct answer. I want to confirm. Next, read the telephonic conversation. Ramesh, hello Riya, where is Mama? Riya, she has gone to kitty party. Ramesh, please tell her that I will bring 2 of my friends for dinner tonight. Fine. Is there anything else she should know? Ramesh, yes. Tell her to prepare fish curry. Riya, is that all? Yes. Ramesh, yes. Bye. Riya has to go to her friend's house. Write a message to her mother on her behalf.
First of all, what have you to write in the first blank? पहले वाले च बेटा तुसी की करोगे, पहले नीचे ऑप्शंस दिते गए हैं, ये थोड़ा नोटिस है, मैसेज है, एडवर्टीजमेंट है कि ईमेल है? It is a message. Next, second option is here date has been given to you, time ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, फिर तुसी सेकंड च की लिखोगे, तुसी सैल्यूटेशन लिखना होता है मैसेज दा, मैसेज किन्नू एड्रेस करके लिख रहे हो तुसी, मम्मा नू एड्रेस करके लिखोगे, सेकंड च आएगा थर्ड ऑप्शन मम्मा। उस तो बाद थर्ड च rang up to tell, किन्ने फोन कीता सी? Your first option will be correct, that is papa, to tell that I will bring, के you will bring, के he will bring, third one will be correct, he will bring 2 of his friends for dinner tonight, he has also told you to make fish curry। fifth last किदा नाम आएगा? it would be Ria। Now thank you so much।